a very warm welcome to the attendees to the brothers versus Sony Innovation Company here. We just started and wishing yourself all the best amazing time to keep so. Easily by high speed internet with the best gaming experience. Just as a couple of jumping, what of process, get some amazing attendees and for the winners we have special prizes. So do join us and सो दिल्ली कॉमिक कॉन 2019 जैसे कि मैं हर साल कहता हूँ थोड़ा थोड़ा बुरा हो जाता है। I've said that before. जो फर्स्ट ईयर में पहले गया था वो सबसे अच्छा रहा था, बट हमारे साथ अभी एक दोस्त था जो पहली बार जा रहा था कॉमिक कॉन, सो ही रियली लाइक द एक्सपीरियंस इवन दो उतना बेटर नहीं था जितना मेरे फर्स्ट टाइम पे था। बट आई विल ऑल्सो टेल यू दैट कि एक्चुअली जब हम पहुँचे वहाँ पे हमें टिकट्स नहीं खरीदी हमने, बिकॉज अ गाय केम टू अस एंड लाइक हम तुम्हें टिकट देंगे, विच वॉज एक्चुअली दैट एग्जिबिटर पासिस, बट उसने कहा कि आप नंबर रख लो और लास्ट में आते हुए दे देना। एंड वी लाइक हम चूते बने रहेंगे ऑब्वियसली। उसने हमें 100 रुपये कम में टिकट दे दी एंड वी जस्ट एंटर्ड, जस्ट वेंट अराउंड एंड लेट्स सी। When you upload, do yeah, sorry, that was probably not the okay. Yeah, it's a limited gene. it's a limited gene. Thanks for being here. There he is. Yeah. Wait. Oh, okay. Hey, all right. Okay. So we talked a little bit about this yesterday, but I was wondering if you could expand on your hopes and fears for comic books in the future. You know, I have no fears for comics. Okay. Everything's changing. Okay, and I think where some people are afraid is everything's moving from printed books to digital. Okay, so there's going to be a transition from the old way of publishing to the new way of publishing. But there's actually more comics being made than ever before. Okay? What's changing is the old way of doing business, the old way of making money, and as a creator, part of your job is going to be figuring out how to support yourself in this new market. I have no doubt in like another 50 years, there will be some very established way. Like if you want to make a job in comics, there'll be a very established way. But right now, you have to do a lot of self-promotion. In America, we call it hustling. You got to hustle, right? Okay. Any of you ever play like, well, in baseball, if the ball is like hard to catch, you have to hustle to catch the ball. All right. So it's sort of a sports term. It means you have to really sort of bust your buns. Okay. And right now, if you want to self-promote a book, if you want to self-publish a book, you have to do a lot of hustling. You can't just. It's not like Marvel or DC where you draw a page, and an editor is going to take it and they're going to do the rest of the work. You're the one that's going to have to do the rest of the work. But I think those paths will solidify as time goes on, as other people do it. Right now, there's a lot of trailblazing, a lot of innovation. So it's a little chaotic. It's a little hard to figure out, but people are doing it. Alright. Oh, another yeah. Hi Chad, can you hear me? Wave your hand. Wave your hand. Hey. Oh, okay, all right, all right. So, as I'm a 3D artist, okay, so how would you say how important drawing is for a 3D artist? How would I say what's going for you? How important drawing is?
I think drawing is the foundation of all art. Okay, I do, and there might be people that disagree with me, and that's fine. But if you're good at drawing, the reason why you're good at drawing is because you understand how to represent something that exists in 3 dimensions and to replicate an image of that in 2 dimensions. And if you're a sculptor or you're using 3D software, what you're doing is you are creating a representation in 3D, okay? So what it really comes down to is your ability to imagine how something exists in 3 dimensions and either recreate it in 2 dimensions or recreate it in 3 dimensions, okay? But I teach, I'm a professor of art at Utah Valley University in Orem, Utah. I have lots of students, and the students who draw well also 3D sculpt well. So I would say it's very, very important. Okay, thank you. All right, more questions. We are taking probably 2 more. We have time for 2 more. So yes, if you have something, go on. And also, now that you mentioned that you're a professor, this is even more important now. So if you really have, guys, if you have questions, ask now. Like these two are very valuable. आने वाले भैया घनश्याम भैया जी। हाँ बिल्कुल चल रही है। Hello guys, how are you? बैठिए, प्लीज सिट। वेलकम टू दिल्ली कॉमिक कॉन। आज स्टूडियो से निकल के यहाँ पे कैसे आना हुआ? सर इनवाइट आया था और हमको कुछ सरप्राइज भी थ्रो करना है। हमने सोचा कॉमिक कॉन में ही बॉम्ब फोड़ते हैं। Oh, is it? क्यों something new coming from Timeliners? Yes, most definitely, and all of you will get to see it today. Okay, but before I go there, man, please give us a little bit on what's happening with Timeliners. You know, what kind of creative pursuits have you been on, और मतलब क्या successes रहे हैं पीछे आपके? कौन से characters काम करके, कौन से characters में बहुत ही fake डाला पर चला नहीं? कुछ हमें scoop दो यार। एक्चुअली लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है टाइमलाइनर्स के लिए। फ्लेम्स 2 जस्ट रिलीज 2 months बैक एंड इट परफॉर्म रियली वेल और सबको बहुत अच्छा भी लगा है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द शोज फ्रॉम TVF ओरिजिनल्स जिसने टॉप 10 IMDb पे लिस्ट किया हुआ है। सो इट्स बीन अ गुड राइड फॉर टाइमलाइनर्स। ऑल्सो कॉलेज रोमांस सीजन 1 परफॉर्म रियली वेल। एज फार एज वीडियोज इज कंसर्न्ड, आई थिंक किराना वाला सीजन 2 बहुत अच्छा इंजीनियरिंग गर्ल्स। Are you okay? Yes ma'am. Guys. मुझे ना लगता है कि हमें रिलैक्सेशन की जरूरत है मेजर। तो आज रात हम हॉस्टल में पार्टी करेंगे। नहीं, आज तो ड्राई डे है। बेफिक्री सो इन द एंड हमने वो टिकट्स वापस देने की जगह हमने आके जाके किसी बंदे को 250 मतलब 200-300 में और 1-250 में बेच दी। मतलब शॉप्स आर फाइन। मैंने एक्चुअली थॉर वाला नहीं, मैंने एक्चुअली एंडमैन वाला लिया जो मैंने करा के तोड़ दिया। आई वॉज रियली सैड अबाउट इट, लाइक मैं रोया अभी ऑलमोस्ट। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, बट कॉमिक कॉन इट्स ग्रेट प्लेस टू गो। तुम जाना चाहते हो जाओ, मैं तो हर साल जाता ही हूँ। इस साल का थोड़ा कम था जितना हर साल होता है, बट स्टिल इट वॉज रियली फन एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड। टिक द लाइक बटन डेट कि दैट इज लाइक डिड नॉट। और आई नो ये व्लॉग इतनी अच्छी नहीं रही है बिकॉज मैं अच्छा नहीं बना पाया, इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड मैंने अच्छा नहीं करा था, बट आई विल टेल यू कि अगली व्लॉग काफ़ी अच्छी होने वाली है। सी यू सून।